हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनत इजीमाइंड ट्यूटोरियल्स। दोस्तों स्वागत करता हूं आपका। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ICCR कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। इन दिस वीडियो यू विल गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैनुअल ऑफ ICCR दैट इज प्रोवाइडेड बाय ICCR ऑफिशियली फॉर द CPT एग्जाम। CPT एग्जाम के लिए ICCR ने मैनुअल प्रोवाइड किया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट मैनुअल। जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो हमारा ये PDF खुल जाएगा. This PDF will open when we click there, and here you can see the manual provided by ICCR. So candidate process manual computer proficiency test. So let us discuss what is written in the manual. तो हम लोग देखते हैं मैनुअल में क्या लिखा गया है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, here you can see duration will be 60 minutes. So it is clear that you will get 1 hour time. आपको 1 घंटा टाइम मिलेगा CPT एग्जाम के लिए. This is for all, that is assist for the post of assistant program officer and program officer. These are the posts in which you will have to appear for computer proficiency test. Okay, इन तीनों पोस्ट के लिए आपको CPT एग्जाम देना है, जिसमें आपको 60 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन मिलेगा, 1 घंटे का, और टोटल मार्क्स आपका 100 होगा. टोटल मार्क्स विल बी 100 मार्क्स एंड द टेस्ट स्ट्रक्चर दैट विल बी टोटल 3 क्वेश्चंस. सो हियर आपको टाइम सफिशिएंट मिलेगा. यू विल गेट सफिशिएंट टाइम फ्रेंड्स. सो carefully solve all the questions, carefully visualize, observe what it is written, how they have represented the format in MS PowerPoint, in MS Excel, or in your MS Word. Okay, exactly you have to do the same things. आपको ditto everything, fonts, the alignments and the coloring, everything. Okay, आपको exactly वही करना है, तभी जाके आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा. You will get the marks and sufficient time you have. 60 minutes is more than sufficient. Okay, for 3 questions. So see here, आपको MS Word में एक क्वेश्चन मिलेगा, 1 question from MS Word, 1 question from MS Excel and 1 from MS PowerPoint. Then what is the step 1? Step 1 देखिए यहाँ पे, candidate needs to create a folder on assigned exam PC with his or her name _ roll number. ठीक है, आपको क्या करना है, पहले जैसे ही आपको जाना है, आपको अपने पीसी पर जो भी आपको कंप्यूटर सिस्टम दिया रहेगा, वहां पे आपका डेस्कटॉप के अंदर जाकर आपको एक फोल्डर बनाना है, जिसका नाम आपको क्या देना है. सपोज आपका नाम राहुल है, तो आप लिखेंगे राहुल _ अपना रोल नंबर, जैसे यहाँ पे लिखा गया है विनीता _ 1234. सो लाइक दिस यू नीड टू क्रिएट ए फोल्डर इन योर डेस्कटॉप. ओके, in this folder you have to save all the 3 files, that is 1 file for Excel, 1 for PowerPoint, 1 for Word. इसी फोल्डर के अंदर आपको एक्सेल, पावरपॉइंट, वर्ड का तीनों फाइल सेव करना है. व्हाट इज द स्टेप 2? कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड ए लिंक ऑन देयर सिस्टम टू गिव द टेस्ट. आपको सिस्टम पर एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है, आपका ऑलरेडी जो ब्राउजर खुला रहेगा, वेदर इट कैन बी आई थिंक गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स, कोई भी एक ब्राउजर आपका ओपन होगा जिसमें एक लिंक वहां पे रहेगा. A link will be provided. Then there you need to enter what? Your login ID and password. वहां पे आपको अपना login ID password देना है. Login ID will be your roll number. Make sure it. Okay, अपना roll number जो है वही login ID रहेगा. And password will be your date of birth. Okay, as simple as that. This will be DDMMYYYY. Suppose your date of birth is 1st January 1996. So what will be it? 01011996. There will be no space, कोई स्पेस नहीं रहेगा, इसी फॉर्मेट पे आपको देना है. Then here you can see this. Okay, and after that step number 3 क्या है आपका? On login करने के बाद candidate will be able to see the test assigned. फिर आपको टेस्ट जो मिला है वो आप देख सकते हैं. Candidate will get just 1 attempt to complete the assessment. एक ही अटेम्प्ट आपको मिलेगा. ऐसा नहीं है कि एक अटेम्प्ट आपने दे दिया और वहां पे कुछ गलती हो गया, आपने फिर दोबारा से उसको लिंक पर क्लिक करके दोबारा से देने का कोशिश किया तो नहीं होगा दोस्तों. ओके, ओनली 1 टाइम यू कैन गिव द टेस्ट. सपोज फॉर एनी फॉल्ट, okay, from your side, not from the technical fault. If there will be any technical fault or other fault, you will obviously get the compensation for that. Okay, अगर आपका और कोई फॉल्ट होता है, टेक्निकल फॉल्ट, उनके तरफ से कोई फॉल्ट होता है, तो उसके लिए आपका कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. अगर आपने अपने तरफ से ही गलती से एंड टेस्ट पर प्रेस कर दिया बिना क्वेश्चन सब चेक करे, तो फिर दोबारा से दोस्तों आपको टेस्ट देने का मौका नहीं दिया जाएगा. ओके, इफ यू हैव बाय डिफॉल्ट बाय मिस्टेकन यू हैव क्लिक्ड ऑन एंड टेस्ट टैब, okay, before checking, ensuring that you have attempted all the questions correctly and whatever, then you will not get any other second chance to reattempt the test. So make sure it, be careful. Then you have to press on continue. फिर continue पर press करके आपको start with the test करना है. Okay, फिर आपका ऐसा आपको दिखेगा, this interface will be visible there. Okay, like this.
Okay, this will be the, suppose this is the link. Okay, then here it is suppose showing this is the select test. You have to test assigned one test is assigned, test taken 0, you have not taken 60 minutes, then you have to press on continue. आपको continue पर press करना है. Then what is the step 4? Candidate need to read instructions carefully and click on start test to start with the test. पहले आपको instructions अच्छे से पढ़ लेना है. And these instructions you read very carefully. During the test, user should not switch between the test page to any other page. This page, suppose this is the page which is the test page, this is the link page. You do not have to switch to any other page, means you do not have to switch to any other tab. Okay, only you have to remain on this tab. Okay, then you have to click on, then you have to click on next and whatever it is. Don't switch to these tabs. ये tabs के ऊपर आप मत जाइए बिल्कुल भी. Okay, इतना खुला नहीं होगा, वहां पे एक ही tab खुला रहेगा. This much of tab will not be open, only one tab will be open there. Okay, you do not have to open any new page. If you by default, by mistaken, if you do that, then there will be warning. 5 warnings are flashed before logout in case user navigates out to any other window or browser during the test. Okay, 5 warning आपको दिया जाएगा, उसके बाद आपका टेस्ट एंड कर दिया जाएगा. वंस लॉग्ड इन, यूजर कैन नॉट लॉग इन फ्रॉम एनी अदर ब्राउजर और सेम ब्राउजर टैब. एक ही ब्राउजर से एक ही बार एक ही यूजर लॉग इन कर सकता है. नेक्स्ट, बाय क्लिकिंग नेक्स्ट बटन द नेक्स्ट क्वेश्चन अपीयर्स. नेक्स्ट बटन वहां पे आपको दिखेगा, नेक्स्ट बटन क्लिक करते ही नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा. एंड टेस्ट, बाय क्लिकिंग द एंड टेस्ट बटन, टेस्ट आपका सबमिट हो जाएगा. अगर आपका पावर फेलियर और इंटरनेट फेलियर होता है, देन टेस्ट विल नॉट बी सबमिटेड. टेस्ट सबमिट नहीं होगा अगर पावर फेलियर इंटरनेट फेलियर होता है. और इसके लिए टेस्ट रिकवरी और रीशेड्यूल के लिए प्लीज आप कांटेक्ट कीजिए किसको, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर. जो भी वहां पे आपके लोकल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो भी इन्विजिलेटर हैं, उनको कॉल कीजिए और एक ईमेल लिखना पड़ेगा आपको info@vbox.com पे. ठीक है, अपना यूजर आईडी लिख के. ये आपका बात का प्रोसेस है, वो आपको समझाएंगे अगर ऐसा कुछ होता है. भगवान करे ऐसा कुछ ना हो और ऐसा कुछ होगा भी नहीं, सब ठीक ठाक चलेगा. ओके, Step 5. What is the step 5? After clicking on proceed now in the above step, the test screen will appear. Test screen appear होएगा as below. इस तरीके से आपका टेस्ट स्क्रीन दिखेगा. नीचे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखेगा. Download the first question by clicking on the download the document. Download the document, एक लिंक आपको मिलेगा. Then solve the exercise. तो ऐसे देखिए यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है दोस्तों, ये आपका टेस्ट का, ये आपका पोर्टल है. तो इस पेज से आपको और कहीं नहीं जाना है, इसी एक पोर्टल में आपको रहना है. ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है डाउनलोड द पीपीटी डॉक्यूमेंट सपोज. तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है. जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आपका पीपीटी डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा. उसके अंदर आपको जो करना है वो कीजिए. उसके बाद उसका नेम जैसे सेव करना है वो बाद में बताया जाएगा. मैंने आपको बताया भी है बहुत बार. मेनी टाइम्स यू हैव बीन टोल्ड हाउ टू सेव द फाइल, वेयर टू सेव द फाइल एंड हाउ टू अपलोड इट. ओके, देन क्लिक टू ब्राउज. यहाँ पे ब्राउज एंड अपलोड यहाँ पे आपको बाद में करना है. ओके, और व्यू अपलोडेड फाइल्स यहाँ पे आप व्यू कर सकते हैं. एक बार इसको व्यू कर लीजिए. वंस यू अगेन व्यू ऑल द फाइल्स सो दैट मेक एंड एंश्योर दैट ऑल द फाइल्स हैव बीन अपलोडेड. सब अपलोड हो चुका है. यहाँ पे आप लोग फ्लैग यूज कर सकते हैं. फ्लैग बटन अगर यूज करेंगे, मतलब आप जैसे मार्क फॉर रिव्यू होता है ना सीबीटी में, द सीबीटी यू हैव मार्क फॉर रिव्यू ऑप्शन, लाइक दैट दिस इज द फ्लैग ऑप्शन. एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, Step 6. After solving your exercise, save the file in your assigned folder. जो assigned folder आपको मिला है, जो आपने सेव किया है, वहां पे आप सेव करना है आपको फोल्डर में. ठीक है, जो कि स्टेप 1 में आपने बनाया था, which you have created in step 1. Next, for MS Excel exercise, name the file as this. You already know, आपको पता है Excel underscore your roll number. Okay, example Excel underscore 1234. For Word again Word underscore 1234. then PPT underscore 1234. mention these, ऐसे ही लिखना है आपको. capital W, small o, small r, small d, like this only you have to write. Okay, exactly the same. then click on, then step 7, click to browse and upload. Here you can see click to browse and upload. then you can browse and upload your file. Okay, next what is the step? Then candidate can preview the uploaded file by clicking on view uploaded file. या view uploaded file में जाकर देख सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. Next what it is showing? Next it is showing friends. Next it is showing like this. If you click on view uploaded file, this will open. ऐसे आपको दिखेगा. यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और फाइल को देख भी सकते हैं जाकर. ठीक है, यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं. दोबारा से अपलोड करना है, डिलीट करके दोबारा से अपलोड कीजिए. ओके, कैंडिडेट्स कैन नेविगेट टू नेक्स्ट क्वेश्चन बाय क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट और प्रीवियस बटन. हियर यू हैव once you have successfully attempted the question and uploaded the file, the question number in the panel will turn green color. अगर आपने सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर दिया है तो यहाँ पे देखिए आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं आप, एरो मार्क के साइड में आपका ग्रीन कलर हो गया. क्वेश्चन नंबर 1 मतलब आपने अटेम्प्ट कर लिया है. एंड द रेड कलर विच इज शोन क्वेश्चन 2, दैट इज फ्लैग, दैट यू हैव नॉट अटेम्प्टेड, दैट इज फ्लैग. ओके, ऐसे. एंड थर्ड इज अनअटेम्प्टेड, टोटली अनअटेम्प्टेड. सेकंड क्वेश्चन यू हैव विजिटेड बट यू हैव नॉट अटेम्प्टेड. फर्स्ट यू हैव अटेम्प्टेड सक्सेसफुली, ग्रीन कलर, एंड दिस इज फ्लैग दैट यू हैव नॉट अटेम्प्टेड, आपने अटेम्प्ट नहीं किया है. ठीक है, इस तरीके से आपको दिखेगा. वही यहाँ पे लिखा गया है, रेड कलर हो जाएगा अगर आपने फ्लैग किया है. देन
follow the steps 5 to 7 to upload all the 3 exercises. And what is the important note? Only after uploading all the 3 exercises, that is Word, Excel and PowerPoint, okay, the candidate should click on end test, then only click on end test. And if you by mistakenly clicked on end test but you have not finished your test, then unfortunately the test will end for you. You will not get another chance. So be careful. After clicking on end test, a pop-up will appear. Are you sure you want to submit the test? This pop-up will be appearing. Then you have to click on yes, then you have to submit it like this. Information, are you sure you want to submit the test? Then click on yes and submit, okay, like this. Then what it is showing? End test successfully. This is showing end test successfully. For security reasons, please exit your browser. Then you have to exit your browser, friends, okay, like this. So friends, this is all about the CPT manual, okay. ये CPT manual के बारे में था. एंड बाकी मैं बता देना चाहता हूँ आपको, if you have any doubt in any application software, any question, you can send your question, okay, in the Telegram group easymind discussion tab, or you can also ask in the comment section, okay. And you can type your exam dates and the shift in which you have the examination, so that we can judge. Also we will have the analysis. हम analysis भी देखेंगे 14 दिसंबर को, सॉरी माफ कीजिएगा 14 फरवरी को. इन 14th of Feb, the students who have the exam in second shift will get the analysis of the first shift also, okay. I will try my best to provide you the best possible analysis. Exactly memory based आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है. ट्राई करेंगे. अगर क्वेश्चन बन नहीं पाया, if question is not possible due to time shortage, I will try to give you analysis by explaining all the things which have been asked, okay. And for the course, अगर आपको कोर्स खरीदना है CPT मॉड्यूल, अभी भी आपके लिए अवेलेबल है only for 49 rupees. Everything is explained in detail in the description box. You can get the payment link and all the things, okay. Also you can get the video regarding that. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, and love you all. God bless you all, and do practice more and more. And if you will qualify, don't take any much tension. Be relaxed, calm, okay. And channel पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए. Thank you for watching. Love you all.